Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you are doing well at your homes. Today we are going to start our lecture number 12. In our previous lectures we have learned about different level of organizations. We have started from lower level of organizations and then we move forward towards the higher level of organizations. In our last lecture we have learned about organ and organ system level, and now in this lecture we have learned about individual level. What is an individual level? Different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. एक complete जो organism है उसको हम individual कहते हैं, and that individual is formed by different organs and organ systems. Okay students, you can observe the body of an animal or a plant that it consists of a number of organs and a number of organ systems, and that organ systems make the body of an animal. In organisms, the functions, processes and activities of various organs and organ systems are coordinated. Okay students, और उस organisms में क्या होता है, जितने भी functions हैं, processes हैं या जो activities हैं various organs और organ systems की, वो coordinated है, means वो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, coordination से work कर रही हैं. For example, ठीक है, हम इसकी example लेते हैं. When a man is engaged in continuous and hard exercise, एक person है वो engaged है हार्ड एक्सरसाइज में, कॉन्टीन्यूसली वो एक्सरसाइज करता है, देन नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, नो जस्ट उसके मसल्स वर्किंग नहीं करते, बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन यू आर रनिंग देन योर हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड, आपका जो हार्ट है उसकी बीटिंग इंक्रीज हो जाती है, एंड योर रेट ऑफ ब्रीथिंग इज आल्सो इंक्रीज्ड, आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हो. Okay, so that during running or exercise, not only your muscles working, but your whole body is working. Along that, there is an increase in the rate of respiration, there is increase in the heartbeat. This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles, which they need for continuous work. और जो एक्सेलरेटेड रेट है रेस्पिरेशन का, एक्सेलरेटेड मीन्स इंक्रीज्ड रेट जो है रेस्पिरेशन का, हार्ट बीट का, वो ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड सप्लाइड करता है मसल्स को, जो उन्हें चाहिए होती है कॉन्टीन्यूस वर्क करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल लेवल क्लियर है. इंडिविजुअल लेवल में हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, होल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. And that organ and organ systems are formed by tissues, by the combination of tissues, and tissues is formed by the combination of similar cells, and cells are formed by different organelles. Organelles are formed by molecules, and molecules are formed by different types of atoms, and atoms have subatomic particles that are called electrons, protons and neutrons. So the students, now you can understand that how different level of organizations works to form a complete individual. Okay students, now you will see at population level. What is population level? Basically, a population is defined as a group of organisms of the same species. एक ही species के जो organisms हैं located at a same place in the same time, एक ही time पे जो रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, that is called a population. For example, species of human is a single species, okay, and dog is another species, cat is another species. Okay students, organisms of a same species is called population. Okay, अब आप इसकी एग्जांपल अपने स्कूल से ले सकते हो, जैसे उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 8 है, 9th है, 10th है, ठीक है, तो उसमें आप ये कंसीडर कर सकते हो ग्रेड 8 जो है वो एक स्पीशीज़ हो जाएगी, ग्रेड 9th जो है वो सेकंड स्पीशीज़ हो जाएगी, ग्रेड 10th जो है वो थर्ड स्पीशीज़ हो जाएगी.
अब बेसिकली स्टूडेंट्स स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इज बेसिकली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग का। वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो देन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग बेसिकली चाइल्ड को कहते हैं, मीन्स वो इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में और वो उससे फर्दर जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। Habitat means the area of the environment in which organism lives। जो हैबिटेट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो रहने की जगह है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर होम इज़ योर हैबिटेट, जहाँ पे आप रह रहे हो। योर एरिया और द नेम ऑफ योर सिटी इज़ द हैबिटेट। ओके स्टूडेंट्स, दीज टू डेफिनेशंस स्पीशीज एंड हैबिटेट इज़ in your separate boxes. You have to learn these two definitions. Now look at the population level. Biologists extend their studies to the population level. Population level तक उन्होंने अपनी studies extend की, where they study interactions among members of the same species living in the same habitat. Species और habitat को बेटे मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। A population is defined as a group of organisms of the same species located at the same place and the same time. For example, human population in Pakistan in 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? Comprises of 173.5 million and 1 million contain 10 lakhs individuals according to the Ministry of Population Welfare, Government of Pakistan. Okay students, now we will move towards the community level. What is community? A community is an assemblage of different populations. Community basically क्या है? जिसमें different populations रहती हैं interacting with one and other within the same environment, और उसी same environment में वो एक दूसरे के साथ भी interact करती हैं। For example, हमारा interaction होता है दूसरे organisms के साथ भी, हमारा interaction है air के साथ भी। फॉरेस्ट में भी कॉन्सिडर्ड एज अ कम्युनिटी। फॉरेस्ट भी कम्युनिटी है और फॉरेस्ट में आप देखते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सारी उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं, बट दे कैन लिव एट द सेम प्लेस एंड दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो दैट इट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। So the students, community clear है? Different populations comprises a community. Communities basically are collection of organisms in which one population may increase and others may decrease. Communities basically क्या होता है? Organisms की collection है जिसमें क्या होता है कि एक population जो है वो increase हो रही होती है, जो second population है वो decrease हो रही होती है, and some communities are complex. For example, a forest community, a pound community, other communities में भी simple। कुछ communities जो हैं वो complex हैं, forest community complex है, लेकिन कुछ communities जो हैं वो simple हैं। A fallen log with various populations under it. In a simple community, number and size of populations is limited. जब हम simple community की बात करते हैं ना बेटे, तो उसमें जो number of populations है ना वो स्मॉल होंगी। बेसिकली कम्युनिटी लेवल क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पॉपुलेशंस दैट लिव्ड इन द सेम प्लेस एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं बेटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, उस कम्युनिटी में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, मीन्स जितनी भी लिविंग चीज़ें आएंगी दे आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स, एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, दीज आर कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर्स। मे हैव ड्रास्टिक मीन्स हार्श, बहुत ज़्यादा जो हैं वो इसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, बुरे असरात आप कह लो, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। एंड लॉन्ग लास्टिंग जो है वो परमानेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उन पे होते हैं, वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो देर तक रहता है। सो द स्टूडेंट्स, कम्युनिटी लेवल इज़ क्लियर्ड नाउ। इंडिविजुअल लेवल इज़ फॉर्म्ड बाय combination of different organ systems. Population level is formed by the combination of different individual of the same species, and community level comprises of different types of populations.
Now we will move towards our last level of organization, that is biosphere level, the part of the earth inhabited. Inhabited का मतलब होता है किसी जगह पे रहना. By organisms, communities इज नोन एज बायोस्फीयर. तो बेसिकली बेटे बायोस्फीयर लेवल में हम पूरी अर्थ को कंसिडर करते हैं, जिसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटीज़ वो सब रह रही हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स. जब हम अर्थ की बात करेंगे बेटे तो उसमें सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट से ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो द स्टूडेंट्स, now the biosphere level is cleared. It is basically the part of the earth in which all the communities are present and there is interaction between living and its non-living components. Students, now see figure 1.3 in which all the level of organizations that we have learned in our lectures are shown. So students, you can see in star shape the first level of organization, subatomic and atomic level, and then by the combination of different atoms a molecule is formed. You can see the मोलेकुलर लेवल. आप बेटे नीचे से इस डायग्राम को देखना स्टार्ट करो. फर्स्ट आपका सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है, देन आपका मोलेकुलर लेवल है, एंड देन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेलिज. Okay students, and that all organelles comprises of a single cell. So students, different cells that are performing similar functions are combined to form a tissue, and then different tissues are organized to form organs, and different organs are combined to form organ systems, and then an individual is formed by the combination of different organ systems. Okay students, and then that individual, different individuals of the same species formed a population level. You can see population level in this figure, and then after that a community level is formed, which is formed by different kinds of populations, and then the biosphere level, which includes the earth. So the students, I hope that you have understand clearly all the level of organizations. You have to learn all these definitions and all these topics, and also solve the questions that are present in your assignment. So the students, stay safe and sound. See you in the next lecture. God bless you.